Hi everyone, welcome to this video. Welcome to Greatful Learner. My name is Deepak Kumar. Today's our topic is rollers, its types and their uses. आज हम बात करने वाले हैं रोलर्स के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। चलिए डिटेल में पढ़ते और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे इंट्रोडक्शन की रोलर्स है क्या। तो बेसिकली रोलर्स आर द कंस्ट्रक्शन प्लांट्स यूज्ड फॉर कॉम्पैक्टिंग मटेरियल सच एज सॉइल, ग्रेवल, सैंड, रोड सरफेस एंड सो ऑन। बेसिकली कंस्ट्रक्शन रोलर से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है जिसका हम यूज करते हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल्स कर में, सॉइल्स का, ग्रेवल का और रोड सरफेस का और सो ऑन। द मटेरियल्स कंपैक्टेड बाय द वाइब्रेशन। जब हम कॉम्पैक्ट करते हैं रोलर्स का, तो जो मटेरियल्स होते हैं वो वाइब्रेशंस वाइब्रेशन से होते हैं, कॉम्पैक्ट या इम्पैक्ट लोडिंग से होते हैं, ग्रेडिंग से होते हैं और डायरेक्ट प्रेशर से भी होता है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोलर कैन बी यूज्ड depending upon the requirements of the project and the type of the material. That is, these are the introduction of rollers. Now the next one is types of roller. There are six types of roller. For first one is cylindrical roller. Second one is 6 foot roller. Third one is pneumatic tread roller. Fourth one is a smooth wheeled roller. Fifth one is vibratory roller. Sixth one is ग्रिड रोलर। तो वन बाय वन करके हम हर एक रोलर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से रोलर वर्क करता है एज ए कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिलेंड्रिकल रोलर है क्या। बेसिकली ये एक ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रोलर है, दैट इज रिलेटिवली लाइट वेट। ये लाइट वेट का होता है, आप देख सकते हैं फोटो में। एंड बेसिकली कैन बी हैंडल मैनुअली एंड or as common throughout history by animals such as oxen and horses. Basically, it is usually made by of iron, concrete, or stone, and the generally pressure around 1 m in diameter and 1.5 meter in length. Basically, the ground pressure that can be generated by a cylindrical roller typically around 7 kg per centimeter square. These are the all about of cylindrical roller. Now the next one is 6 foot roller. Basically 6 foot roller क्या होता है, आप देख सकते हैं इस वीडियो में, सॉरी इस फोटो में, स्लाइड में, कि किस तरीके से 6 फुट रोलर्स है। सबसे पहले 6 फुट रोलर्स कंसिस्ट ऑफ ए स्टील ड्रम ऑन विच round or rectangular protrusions are known as the lugs or the feet, and are fixed. There are different types of lugs such as the splinter shaped and the winged, and these are the configuration. And the basically the 6 foot rollers, basically the weight can be increased by the ballastings with water, damp sand by mounting steel and iron. बेसिकली दे आर कॉमनली यूज फॉर कंपैक्टिंग फाइन ग्रेन सॉइल। बेसिकली इसका यूज हम करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में ये क्या है, गैप्स है, वाइड्स है। तो ये जब कंपैक्ट करता होगा तो बीच में इस तरीके से कंपैक्ट करता होगा कि लाइक फाइन ग्रेन सॉइल कॉम्पैक्ट अच्छे से हो जाए। फिर सच एज हैवी एंड सिल्टी क्लेज को भी कंपैक्ट करने का काम करता है। दे आर ऑफ्टन यूज फॉर द कंपैक्टेशन इन डैम्स। बेसिकली इसका जो यूज हम डैम्स में करते हैं। सबग्रेड लेयर्स एंड पेवमेंट्स, रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट ऑल्सो वहां भी करते हैं। नाउ द थर्ड वन इज pneumatic ट्राइड रोलर, बेसिकली ऑल्सो नोन एज द रबल ट्राइड। देख सकते हैं यहाँ पे जो इस तरीके इसका व्हील है वो pneumatic ट्राइड रोलर। बेसिकली दे आर रबल ट्राइड रोलर, these consist of a heavily loaded wagon with several rows or closely spaced tires, basically, and they provide uniform pressure throughout the width and the covered are after in pavement subgrade works as they are suitable for compact uniform course and soil rocks. Okay, now the next one is a smooth wheel roller. Basically, a smooth rolled wheeler क्या होता है, ये हम देखे होंगे रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं रोड को कंपैक्ट करने के लिए। ठीक है, दिस टाइप्स ऑफ रोलर इनकॉर्पोरेट्स लार्ज स्टील ड्रम, लार्ज स्टील ड्रम होते हैं, एंड द फ्रंट ऑफ द व्हील्स वी हैव यूज्ड इन टेंडम रोलर्स एंड the three rollers if there are two wheels at the rear, and they with tandem rollers to 2 to 8 tons, basically 2 to 8 tons, and the roller and the weight rollers and the from 8 to 10 tons. The ground pressure exerted by the tandem rollers is typically 7 to 17 kg per centimeter square. It is covered at a tandem rollers basically. Now the performance of smooth wheel depends upon the load per centimeter which transferred by the soil, which is derived from the construction and the weight of drive. Now the next one is vibratory road. Basically what is vibratory road, which are used to bitumen's road construction compacting के लिए हम उसका use करते हैं. This type road is 50 with one or two smooth surfaced steel drums measuring
measuring from 0 to 9 to 1.5 meter in diameter, and the width is basically 1.2 2 to 1.8 meter in depth, and the drums vibrate by the rotation on the eccentric shaft inside. You have seen here in this slide, the vibrating roller to vibrate out inserting shaft inside, and the diameter shape is 0.9 to 1.5, and the width of the vibration of the vibratory roller is 1.2 to 1.8 meter, and they are commonly used for compacting general base courses and the for asphalt norms. Now, the the next one is grid loader. Basically, grid loaders have a cylindrical happy steel surface comprising of a network steel bars and the grid with a square shaped holes. If it is commonly used for the roller to blasted with concrete blocks basically, and this type of roller is generally to unit provides the high contact pressure and the minimal trading X. These are the six types of roller one by one discuss in this slide. And now these are the parts of the rollers. Basically, warning light. These are protect form. These are the steering wheel, and these are the engine cover basically, and these are the LED light. These are the stepping fender. These are the vibrator basically, front steel drum, and these are the vibration motor. These are the hiding drum and the real steel drum, and these are the driving motor. These are the control handle. This basically this one, and the leather seat. Okay, these are the component of roller. Basically, the roller's name is strike roller and the ST 3000s. These are the rollers. Now, the also the parts of the roller in which in the depth of the roller basically these are the Baliza and the GNSS, the bombas will be proliciums, then the capsules basically the steel drums upper, and the stretchers through the vibrator, and these are the tapondra and the motor hydraulic also, and the third one is differential of the predicament limited, and the reversible ones of difference acetate and the hydraulic combustor. These are the DPF and the component, the depth component of the rollers. Okay. Now the next one is now. Thank you so much. Thanks for watching this video. If you're enjoying this video, please like and subscribe. And we are meeting with another videos. These are the all about the rollers. These are the construction equipment. Same as I uploaded construction equipment videos, the excavator, the bulldozer, the motor graders. These type of video are uploaded on my channel. So if you are enjoying this video, please like and subscribe and do watch this type of video also. Thank you so much.